हाय। 2 दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। Excellency, Mr. Shafkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ministers, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where 17 documents will be exchanged. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev janob oliylari, muhtaram Hindiston bosh vaziri Narendra Modi janob oliylari, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun ushbu marosimda ikki davlat o'rtasida 17 ta hujjat almashinuvi ko'zda tutilmoqda. I will now announce the first 3 agreements. The first is the agreement for visa-free travel for diplomatic passport holders. Number 2, program of cooperation between the Ministries of Foreign Affairs of Uzbekistan and India for 2019-2020. Third, agreement on cooperation in the field of tourism. These 3 agreements will be exchanged on the side of Uzbekistan by their Foreign Minister, His Excellency Mr. Abdul Aziz Kamilov, and on the Indian side by Srimati Sushma Swaraj, Minister of External Affairs. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Tashqi ishlar vaziri Sushma Swaraj diplomatik pasport egalarini viza talablaridan ozod etish to'g'risida bitim, Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi hamda turizm sohasida muqarrar bitim. Fourth is a memorandum of understanding on cooperation in the field of military education. This will be exchanged by His Excellency Mr. Abdul Salam Azizov, Minister of Defense of Uzbekistan, and by Srimati Sushma Swaraj, Minister of External Affairs. Mudofaa vaziri Abdusalom Azizov va Tashqi ishlar vaziri Sushma Swaraj harbiy ta'lim sohasidagi memorandum. Number 5, MoU on cooperation in the sphere of law and justice, to be exchanged by His Excellency Mr. Ruslan Davletov, Minister of Justice of Uzbekistan, and by Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice of India. Adliya vaziri Ruslanbek Davlatov hamda qonun va adliya vaziri Shri Ravi Shankar Prasad huquq va adliya sohasida anglashuv memorandumi. Number 6, agreement on cooperation in the field of agriculture and allied sectors, to be exchanged by His Excellency Mr. Abdul Aziz Kamilov, Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan, and Shri Radha Mohan Singh, Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda qishloq xo'jaligi vaziri Shri Radha Mohan Singh qishloq xo'jaligi sohasida hukumatlararo bitim. Number 7, agreement on cooperation in scientific, technical and innovation fields, to be exchanged by His Excellency Mr. Ibrahim Abdurrahmanov, Minister of Innovative Development, and Dr. Harsh Vardhan, Minister of Science and Technology, Earth Science and Environment and Climate Change. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov hamda fan texnologiyalar va yer fanlari vaziri Harsh Vardhan fan texnika sohasida hukumatlararo bitim. Number 8, agreement on cooperation in the field of health and medical science, to be exchanged by His Excellency Mr. Alisher Sadmanov, Minister of Health, and Dr. Harsh Vardhan, Minister of Science and Technology. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov hamda fan texnologiyalar vaziri Harsh Vardhan sog'liqni saqlash va tibbiyot ilmi sohasida bitim. Number 9, MoU on cooperation in pharmaceuticals, to
to be exchanged by His Excellency Mr. Alisher Sadmanov, Minister of Health, and Shri Mansukh L. Mandavia, Minister of State in the Ministry of Road Transport, Highways, Shipping, Chemicals and Fertilizers. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov hamda kimyoviy moddalar vaziri Shri Mansukh L. Mandavia farmatsevtika sohasida anglashuv memorandumi. Number 10, Memorandum of Understanding for the establishment of the Uzbek India Pharmaceutical in Free Zone of the Andijan region of Uzbekistan, to be exchanged by Mr. Shukratak Bek Abdurrahmanov, Kokim of Andijan region, and Shri Mansukh L. Mandavia, MoUs, Chemicals and Fertilizers. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov hamda kimyoviy moddalar davlat vaziri Shri Mansukh Mandavia erkin farmatsevtika zonasini tashkil qilish to'g'risida memorandum. I now announce agreements number 11 and 12. 11, MOU for cooperation in the area of national security. Number 12, agreement on cooperation in combating illicit trafficking of narcotic drugs. This will be exchanged by Mr. Viktor Makhmutov, Secretary to the Security Council of Uzbekistan, and Shri Rajendra Khanna, Deputy National Security Advisor. Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov hamda milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi o'rinbosari Shri Rajendra Khanna xavfsizlik sohasida ikkita hujjatni almashadilar. Number 13, MOU between the Indian Council of World Affairs and the Institute for Strategic and Regional Studies of Uzbekistan, to be exchanged by Mr. Vladimir Norov, Director of the Institute for Strategic and Regional Studies of Uzbekistan, and Srimati Ruchi Gansham, Secretary West, Ministry of External Affairs. Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori Vladimir Norov hamda xalqaro munosabatlar bo'yicha kengash kotibi Ruchi Gansham ikki tomonlama anglashuv memorandumi. Number 14, agreement on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes, to be exchanged by His Excellency Mr. Shurat Sadikov, Minister for Development of Information Technologies and Communications, and Shri Vinod Kumar, Ambassador of India to Uzbekistan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Shuhrat Sodiqov va Hindistonning O'zbekistondagi elchisi Shri Vinod Kumar kosmik fazoni tadqiq etish sohasida hukumatlararo bitim. Number 15, MOU between the Kokimiyat of Samarkand city and the Municipal Corporation of Agra, to be exchanged by Mr. Forkot Rakimov, Kokim of Samarkand city, and Shri Vinod Kumar, Ambassador of India to Uzbekistan. Samarqand shahar hokimi Furqat Rakimov va elchi Shri Vinod Kumar Samarqand va Agra o'rtasida anglashuv memorandumi. Number 16, MOU between Kokimiyat of Andijan region and the state of Gujarat, to be exchanged by Mr. Shukratak Bek Abdurrahmanov, Kokim of Andijan region, and Shri Vinod Kumar, Ambassador of India to Uzbekistan. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov va Hindiston elchisi Shri Vinod Kumar Andijon va Gujarat o'rtasida anglashuv memorandumi. Number 17 is an agreement to establish the India-Uzbekistan Business Council. This is being signed by the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan and CII of India, to be exchanged by Mr. Atkam Ikramov, Chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, and Shri Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry. Savdo sanoat palatasi raisi Atkam Ikromov va sanoatlar konferensiyasi bosh direktori Shri Banerjee ishbilarmonlik kengashini tashkil qilish to'g'risida bitim. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Shuning bilan imzolash marosimi yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Good afternoon, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to you all to this press event. To begin the proceedings, may I invite the Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency और मेरे मित्र राष्ट्रपति मिर्जी योवेव, उज्बेकिस्तान से आए
सम्मानीय अतिथि और मित्रगण, भारतीय शिष्टमंडल के सभी सदस्य, नमस्कार। राष्ट्रपति जी, यह आपकी भारत की पहली स्टेट विजिट है। मुझे बेहद खुशी है कि यह यात्रा आप अपने परिवार और एक सशक्त डेलीगेशन के साथ कर रहे हैं। आपका और आपके परिवार का तथा डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच समानताएं और नजदीकी रिश्तों के गवाह हमारे साझा इतिहास और संस्कृति है। मेहमान, दोस्त और अजीज, ऐसे कितने ही शब्द दोनों देशों में समान रूप से जाने जाते हैं। ये सिर्फ भाषा की समानता नहीं, यह दिलों और भावनाओं का मिलन है। मुझे गर्व है और प्रसन्नता कि हमारे देशों के रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत नींव पर बनी है। राष्ट्रपति जी, आपसे मेरा परिचय 2015 में मेरी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान हुआ था। आपकी भारत के प्रति सद्भावना और मित्रता ने और आपके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यह हमारी चौथी मुलाकात है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक घनिष्ठ मित्र हैं, अजीज दोस्त हैं। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आपके साथ एक सशक्त डेलीगेशन आपके साथ है। आपके आदेश और मार्गदर्शन और पिछले कुछ दिनों में भारत में उनकी उपयोगी मुलाकातें हुई है। आज हमारे बीच बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा बनाने और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के हमारे विजन और प्लान्स को हमने साझा किया है। हमारे पुराने दोस्ताना रिश्तों को आज के संदर्भ में और भी समृद्ध करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म व्यू लिया है। क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे जिनसे हमारी सुरक्षा, शांति, समृद्धि और सहयोग जुड़े हैं, उन पर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ है। इन मुद्दों पर और सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने हमारे सहयोग को और गहरा बनाने का निर्णय लिया है। आज की मुलाकात में हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हुए हैं कि अब हमारे देशों के बीच के प्राचीन और प्रगाढ़ संबंधों को हमारे लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विस्तार देने का समय आ गया है। एक्सेलेंसी, आपके कई साहसी और ठोस कदमों और सुधारों ने उज्बेकिस्तान पूरी व्यवस्था को पीछे छोड़कर आधुनिकता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आपके नेतृत्व और विजन का परिणाम है। मैं इसका स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे और भी सफलता के लिए मेरी तरफ से 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उन प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे मौजूदा सहयोग को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए
हमने आज खास तौर पर चर्चा की। हम व्यापार और निवेश के रिश्तों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने 2020 तक $1 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट रखा है। हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव पर हमने उज्बेकिस्तान के सामाजिक क्षेत्रों में कम लागत के घरों और ऐसे और भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा $800 मिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट तथा एक्जिम बैंक द्वारा बायस क्रेडिट के अंतर्गत भी हम उज्बेकिस्तान के प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। अंतरिक्ष, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान के हित के लिए भारत के अनुभव से लाभ उठाने का प्रस्ताव हमने रखा है। भारत और उज्बेकिस्तान के राज्यों के बीच बढ़ते सहयोग का हम स्वागत करते हैं। आज आगरा और समरकंद के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट और गुजरात और उज्बेकिस्तान के अंदीजन के बीच समझौते हुए हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के रास्तों पर हमने विचार किया है। व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए चाबहार के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत अशगाबाद एग्रीमेंट का फरवरी 2018 में सदस्य बना है। इसमें समर्थन के लिए हम उज्बेकिस्तान के आभारी हैं। हमें खुशी है कि उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने पर सहमत हुआ है। एक्सेलेंसी, आपके वरिष्ठ सलाहकार और मंत्री कल गांधी सैनिटेशन कन्वेंशन के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश के प्रति आपके मन में जो सम्मान है उसने भारतीय के हृदय को छू लिया है। ताशकंद से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति जुड़ी है। शास्त्री जी के स्मारक और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के रिनोवेशन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन दोनों महान नेताओं की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर आपकी भारत में मौजूदगी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। एक्सेलेंसी, ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे रक्षा संबंधों में वृद्धि हो रही है। आज की मुलाकात के दौरान हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण समेत अन्य आवश्यक क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। राष्ट्रपति जी, आपसे विचार विमर्श ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और उज्बेकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उज्बेकिस्तान के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। इसमें भारत उज्बेकिस्तान के साथ हर संभव सहयोग करेगा। स्थिर, लोकतांत्रिक और समावेशी एवं समृद्ध अफगानिस्तान हमारे पूरे क्षेत्र के हित में है। मुझे खुशी है कि इस संदर्भ में हमारे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने का निर्णय हमने लिया है। सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे संबंधों के आधार स्तंभ है। ई वीजा, पर्यटन, एकेडमिक एक्सचेंज और एयर कनेक्टिविटी इत्यादि विषयों पर आज हमने चर्चा की है। एक्सेलेंसी, अब हम एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे
और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मैं भारत में आपके सुखद और फलदायी प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाशिबा। Thank you, sir. May I now invite the President of the Republic of Uzbekistan to deliver his remarks to the media. Ваше превосходительство, господин Нарендра Моди, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Your Excellency, Mr. Prime Minister Narendra Modi, dear representatives of the mass media, ladies and gentlemen. Прежде всего, хотел бы сердечно поблагодарить моего брата, премьер-министра Индии господина Моди и всех наших индийских друзей за теплый прием и гостеприимство. Above all, I would like to cordially express my gratitude to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and to all of our Indian friends for a warm welcome and hospitality. Позвольте выразить глубокое уважение народу Индии, страны с древней историей и богатейшей культурой, огромным политическим, экономическим и интеллектуальным потенциалом. Also, allow me to express my deep respect to the people of India, the country with an ancient history and the richest culture, enormous political, economic and intellectual potential. Мы высоко ценим достигнутый уровень отношений между нашими странами и народами, которые связаны многовековыми историческими и культурными узами. We do highly appreciate the achieved level of the relationships between our countries and the nations, which are linked and connect to one another with many centuries old historical and cultural ties. Еще раз подчеркну, укрепление стратегического партнерства с Индией – один из важнейших приоритетов внешней политики Узбекистана. I would like to underscore once again, consolidation of the strategic partnership with India stands as one of the most important priorities of Uzbekistan's foreign policy. Итогами наших переговоров, прошедших в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, стали принятие совместного заявления, подписание важных межправительственных и межгосударственных документов, о котором вы были сейчас свидетелями. Вы знаете, это на самом деле исторический визит и исторически подписанные документы. За всю историю нашего взаимоотношения такого не было. As the outcomes of our negotiations, which have been held in a traditionally friendly and constructive atmosphere, have become the follows. That is to say, the adoption of the joint declaration, signing a very important intergovernmental as well as the interstate documents. And in this very regard, I would like to underscore this visit stands as a historical visit. And the documents which have been signed today stand as a very historical documents. Indeed, in the history of our relationships between the two countries, we did not and we never had such kind of practice before. Мы продемонстрировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, кардинальном расширении торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также продолжении взаимодействия в рамках авторитетных международных структур, как Организация Объединенных Наций, Шанхайские организации сотрудничества. We have demonstrated the mutual interest in further strengthening the political dialogue, cardinally expanding the trade, economic investment, as well as the cooperation in the culture and the humanities, as well as in continuing the interaction between the two countries in the framework of the high-profile international organizations and the structures such as the United Nations Organization, Shanghai Cooperation Organization. Хочу подчеркнуть, наши позиции и оценки по всем рассмотренным вопросам совпадают или близки. Сегодня Индия, будучи одной из крупнейших мировых держав, принимает активное участие в решении глобальных проблем.
Учитывая это, Узбекистан вновь подтверждает свою поддержку Индии, чтобы она в качестве постоянного члена вошла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. I would like to especially underscore that our positions and evaluations on all issues that we have today considered and addressed do coincide or are very close to one another. At the moment, India, as one of the largest world powers, is taking an active participation in addressing the global problems. While taking these factors into very consideration, Uzbekistan once again does confirm its support of India, so that India should join the United Nations Organization's Security Council as a full-fledged and permanent member. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам координации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. At the course of the negotiations, we have exchanged the views and opinions on issues of coordinating the joint efforts on the struggle against terrorism and extremism, illegal drug trafficking. Мы уделили серьезное внимание общей для нас проблеме продолжающегося конфликта в Афганистане. Наше общее мнение, что нет военного решения этой проблемы. Единственный путь к миру – политический диалог между правительством Афганистана и оппозицией. We have paid a very serious as well as scrupulous attention to the very problem of which common to us, the ongoing conflict in Afghanistan. This is our common opinion, which is follows, that there is no military solution of this problem. The only way to the peace, this is a political dialogue between the government of Afghanistan as well as opposition. Уважаемые друзья, мы критически проанализировали состояние нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Dear friends, we have also critically analyzed the state of affairs in terms of our trade, economic, as well as investment cooperation. Последние годы товарооборот составляет порядка $300 миллионов. Надо признать, что его нынешний уровень не соответствует потенциалу двух стран. В этой связи мы отметили, что у нас есть все возможности для наращивания объема взаимной торговли как минимум 2-3 раза, как мой друг господин Наради Моди сказал, что мы должны довести до 1 миллиарда. Это очень большая планка. И на самом деле все переговоры до визита, вот уважаемый мой друг господин Моди сказал, что солидная делегация приехала. И на самом деле члены этой делегации сделали совместно с нашими индийскими коллегами очень многое. И то, что сегодня уже подписано, это говорит о многом. И тот план, который мы перед собой поставили, мы обязательно ее достигнем. For the last years, the trade turnover between the Republic of Uzbekistan and the Republic of India makes up nearly $300 million. And we should be recognizing the very fact that the current level does not meet the potential of the two countries. In this regard, we have underscored the very fact that we have got all the opportunities and the capabilities to extend the volumes of the mutual trade as minimum twofold in the nearest years to come. As my dearest friend, His Excellency Mr. Prime Minister, has underscored that it is our plan to get that number up to $1 billion. And indeed, dear colleagues, you can believe this, it's a big plan, it's a big intention for the days to come. And as Mr. Prime Minister Modi has underscored that all of the negotiations that have taken place on the eve of this visit, as well as by the participation and the arrival from Uzbekistan of the high profile, as well as the solid delegation, and they have done a lot in this direction. And in this very regard, the signed documents do confirm the very need as well as the intention of ours to work further ahead to extend the relationships. В ходе нынешнего визита подписаны соглашения и контракты между ведущими компаниями наших стран на сумму свыше $3 миллиардов. Мы договорились содействовать реализации совместных проектов и программ в сферах, отраслях, где наши индийские партнеры обладают передовым опытом и технологиями.
At the course of this current visit, the agreements and the contracts have been signed among the leading companies of our countries, worth more than $3 billion, and we have agreed to promote the implementation of the joint projects as well as programs in the spheres and branches where our Indian partners do have the advanced experience as well as the high-level technologies. В частности, это развитие современного сектора услуг. Будет сформирована совместная рабочая группа в рамках межправительственной комиссии. In particular, we are talking about the development of the modern sector of services. The joint working group in the framework of the Intergovernmental Commission shall be established. Создание совместного технопарка с привлечением общества парков программных технологий Индии. Открытие филиалов ведущих индийских университетов в Ташкенте. Also, we are talking about the establishment of the joint technological park with the attraction and involvement of the Society of Parks of Program Technologies of India, as well as the establishment of the branches of the leading and advanced Indian universities in Tashkent. Создание в Узбекистане современных многопрофильных медицинских центров и фармацевтических предприятий. Also, we are talking about the establishment in Uzbekistan of the modern, multifaceted medical centers as well as of the pharmaceutical enterprises. Строительство современных гостиниц в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, освоение перспективных месторождений углеводородов и вольфрама в Узбекистане, производство готового текстиля, изделий из кожи и многие другие. The construction of modern hotels in the cities such as Tashkent, Samarkand, and Bukhara, the mastering of the prospective deposits of the hydrocarbons as well as tungsten in Uzbekistan, and the production of the ready-made textile goods from leather and many others. Кроме того, между нашими ведущими банками достигнута договоренность о финансировании совместных проектов. Мы договорились тесно сотрудничать в сферах развития новых транспортных коридоров и потенциала логистических центров в двух странах. Besides that, our leading banks have reached the agreement in terms of the financing and the joint projects. We have agreed to closely cooperate in the sphere of development of the new transport connectivity corridors and the potential of the logistical centers in both nations. Большой потенциал мы видим в межрегиональных контактах. В ходе визита, как вы уже были свидетелем, установлены партнерские отношения между штатами Гуджарат и Анджанской области, историческими городами Агра и Самарканд. We do see the highest potential in the interregional contacts between the two nations. During the course of this visit, the partnership relationships have been established between the state of Gujarat in India as well as Andijan region in Uzbekistan, as much as the historical cities of Agra and Samarkand. Имеются большие возможности для взаимодействия в таких сферах, как образование, наука, туризм, культура и искусство, в том числе кинематографии. There are big opportunities for the interaction as well as the engagement in such spheres as the education, science, tourism, culture, and art, including in the cinematography. На переговорах с индийскими партнерами мы договорились о сотрудничестве в области молодежной политики. Первым шагом могло бы стать проведение фестиваля узбекской индийской молодежи. The negotiations with the Indian partners, we have agreed about the cooperation in the area of the youth policy. As a first step in this direction could be the holding of the festival of the Uzbek Indian youth. Ваше превосходительство, господин премьер-министр, пользуясь случаем, хочу вручить вам изданное на днях в нашей стране на узбекском языке 8-томное собрание сочинений великого индийского писателя и мыслителя Рабиндраната Тагора. И для меня было большой честью написать предисловие к этому изданию. Пусть это станет еще одним символом крепнейшей духовной связи между нашими народами. Your Excellency, Mr. Prime Minister, I am taking this very fine opportunity. I would like to grant you this 8-volume collection of the essays of the great Indian writer and the thinker Rabindranath Tagore, which has been recently published in our country in our native Uzbek language. It has been a great honor to write the foreword to this collection. Let this collection be a symbol of the solidified spiritual ties between our countries.
заключение хотел бы еще раз выразить, господин премьер-министр, признательность. Я хочу искренне сказать, что наши сегодняшние переговоры в узком составе и в расширенном составе, они были очень доверительными, открытыми, и я очень удовлетворен нашими сегодняшними переговорами, и я еще раз выражаю искреннюю признательность за такое гостеприимство и прекрасную организацию нашего визита. Большое вам спасибо. In conclusion, I would like to once again express you, Mr. Prime Minister, our appreciation for the hospitality as well as the wonderful organization of our state visit. And I'm taking this opportunity, and I would like to say sincerely that during the tete-a-tete negotiations as well as the delegation level talks, we have had very trustworthy and open negotiations with our Indian partners. I'm pretty much well pleased of our talks today. Well, thank you very much once again. Thank you, Excellency. This concludes the press event.